if intra-party elections were not held, the benefits occurring pursuant to the holding of elections could not be claimed. In view of the above discussion, the Commission has arrived at conclusion that the petitioner's claim for recording his party name in column 5 of Form 33 is misconceived and the petition is hereby dismissed. We exactly took this position, sir, jo aap When keh you rahe hain. conclude, I'll ask a question. Ji. We exactly took this position that even if the symbol has been taken away, we are still PTI candidates. Because of the And- Form A. Yeah, yes, and Form 33 में हमारी पार्टी एफिलिएशन शो कर ये ऑर्डर चैलेंज हुआ था कहीं? ये ऑर्डर नो डायरेक्ट नहीं है, ये इसकी डायरेक्ट अपील थोड़ी है सेक्शन 5 के तहत, 9 के तहत। सेक्शन 9(5) के तहत डायरेक्ट अपील होती है इस ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट में, या रिट होती है? इसकी अपील जी सर। And what is the status of the leave petition? that was returned. That was returned to us as having become infructuous because by then the election had happened in the 8th. This was dated the 2nd after the 8th. Did you file a chamber appeal against that? But I will explain what was happening to me on the 8th and the 9th. ये जस्ट जवाब दे देना, एक्सप्लेनेशन की क्या जरूरत है, या फाइल की या नहीं? It was filed. But this is what. So this para 12 as I नहीं, पहले understand तो ये it, बात is होना कि ये डायरेक्ट अपीलेबल सुप्रीम कोर्ट में है या रिट फैसल होनी है? सिद्दीकी साहब, अब आप समझिए जरा दुश्वारी आपकी। जी जी अब आपकी दुश्वारी क्या है? आप चाह रहे थे अपने आप को जाहिर करना पीटीआई कैंडिडेट, ठीक है जी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं तो फिर पीटीआई को क्योंकि सिंबल नहीं मिला तो आपको हम नहीं दे सकते। जी ठीक, यही हुआ ना। अगर आप अपने आप को जाहिर उस वक्त करते इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और कहते जी अब मुझे दे दें, बैठ की पब्लिक डोमेन में, किसी के पास नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वो आपने केस, या अगर ये हम चलें इसी को अब मान लें जो आपकी बात है, आपने दो चीजों को साथ जोड़ लिया। अगर तो फिर तो देखिए कानून एक चीज करता है, हमने कानून नहीं बनाते हैं, हम ना, इसमें तो तशरीह की भी जरूरत नहीं क्योंकि कानून बिल्कुल वाज़ेह है। कानून ने क्या कहा जी आप इलेक्शन करवा लें अपनी पार्टी में, इतना सा। अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो फिर इलेक्शन सिंबल ना बनाए आपको मिलेगा। ये कानून हमने नहीं बनाया, ये कानून आप लोगों ने बनाया है, ठीक है। आप कहें कानून पे मतअमल करो, वो एक अलग बात है, या किस कानून को उड़ा दें वो एक और बात है। ये कानून जिनने बनाया, जिन्होंने इसके हक में वोट दिया, उन्होंने सोच समझ के कानून बनाया। अब आपके जो कैंडिडेट्स थे उनको उस वक्त चाहिए था, मैं आपको मशवरा ही दे सकता हूँ, बल्कि हम कोर्ट के दरमियान भी आपको मशवरे दिए थे जिस पर अमल नहीं हुए क्योंकि खैर छोड़ें। वो आपने कहा कि मुझे पीटीआई का कैंडिडेट जाहिर करें। जब पीटीआई का कैंडिडेट जाहिर करें तो उन्होंने कहा आपने मुझे पीटीआई का सिंबल है, उन्होंने कहा पीटीआई का सिंबल नहीं मिल सकता। अगर वो कहते मुझे आप आज़ाद कैंडिडेट जाहिर करें, ये रिकनसाइल बिल्कुल आराम हो सकता है, फिर मुझे आप दे दीजिए बल्ला का निशान, वो आपको मेरे ख्याल में मिल सकता था आराम से, मेरे ख्याल में कोई ऐसी दुश्वारी नहीं थी। चलें, कम से कम आप मांगते तो फिर होता क्या, उस पर सुप्रीम कोर्ट आता, मामला फैसला कैसे होता, वो फिर अब मफरूज़ों में पड़ जाएंगे, मगर आपने वो इख्तियार नहीं किया। अब आपके साथ एक और मसला खड़ा हो गया, या तो आप कुछ ना करते, चलें सिंबल भी गया, वो सिंबल को छोड़ दीजिए। अब आपको चाहिए कि ये किसके कैंडिडेट्स हैं। जब आपने नॉमिनेशन पेपर में अपना नाम दे दिया एज पीटीआई कैंडिडेट, अब आप ज्वाइन कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, अब आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आप बहस कर रहे हैं मैं इसलिए इंडिपेंडेंट हूं क्योंकि मुझे बैट का सिंबल नहीं मिला। ये आपकी लॉजिक मुझे समझ आ रही है। मैं ये लॉजिक, अच्छा चलें फिर जो भी आपकी सुन लेंगे। मेरी लॉजिक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा मैं इंडिपेंडेंट। इलेक्शन कमीशन जो कहे, हम कानून देखिए, हम कानून और आइन पे चलेंगे ना। इलेक्शन कमीशन कल आप देखिए, इलेक्शन कमीशन के रोजाना स्टडी चाहिए ना, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स हमारे सामने रोजाना चैलेंज होते हैं। आखिर में हम ये फैसला नहीं करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला कर दिया, वो एक बात दूसरी के डिस्क्रिशनरी पावर उनका उनको करने दें, उसको हट करके हतमी फैसले तो यहीं से होंगे। तो जब आपने अपने आप को पीटीआई का कैंडिडेट तस्वुर किया और दिखाया, तो आपकी पार्टी में जब दाखिला लिया तो आप इंडिपेंडेंट की तरह से नहीं आ रहे हैं, आप पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, आप पार्टी को ठुकरा करके आ रहे हैं, एक दूसरी पार्टी में आ रहे हैं। ये आपका हक है, मगर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज आ जाएंगे। फिर तो आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, वहां से थोड़ा ले लिया आपने, थोड़ा सा यहाँ ले लिया, फिर आप वहां से कहते हैं मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ, आजाद हूँ, मुझे बल्ले का निशान दे दो, किसी और ने नहीं मांगा, मुझे मिल गया। अब वो देती ना देती इलेक्शन कमीशन, यकीनन आप आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि क्यों मुझे इंक्वायरी कर रहे हैं।
بہرحال اس پہ اگر آپ وضاحت کرنا چاہیں کر دیجیے گا ابھی یا بعد میں. Sir, two. The first thing is that this order does not deal with election symbol. It only deals with whether I'm an independent candidate or a PTI candidate. The Election Commission decided that I'm an independent candidate, I'm not a PTI candidate. No, Mr. Faisal Siddiqui, ये जो This is what the Election Mr. Commission Faisal decided. Siddiqui, ये जो because they Mr. have Faisal confused. Siddiqui, ये जो ECP का फैसला था जिसमें उन्होंने कहा कि you are independent candidate, whether that order was challenged before any higher forum, No. so it attained finality. Yes. So till today, the status says they're all independent candidates. Yes. اس سے So there's no need to go behind that. اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ جو ریٹ فائل کی تھی صدیقی صاحب Para 12, you see, the Election Commission is confusing and conflating election symbol and political party. They're saying if you don't have an election symbol, you're not a political party. But that Whereas order the has not been Parent challenged. Act says something else. Or the Parent Act says your nomination form, if it says you are ex-political party, you are ex-political party. That's all you wanted. My name, ex-political party, give me whatever election symbol you want to give me. Other than bat, because that you can't give because the Supreme Court judgment is in the field. And that has to be applied, which they have done. देखें इस वक्त तो एट प्रेजेंट यू आर दी कैंडिडेट ऑफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ठीक है ना. अब आप इससे पूरी जो हम बैक उसमें जा रहे हैं रिट्रोस्पेक्टिवली, ये सवाल पूछा था ना मैं कि- अपनी बात कर रहा हूँ. तो इस वक्त तो पोजीशन आपकी पीटीआई तो सामने है ही नहीं. अब आप सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी है सीटें, नहीं मिलनी है, ये बात है. Sir, on a light- जो मैंडेट इसके लिए पीटीआई का था वो तो आप लेके चले गए सुन्नी اس کے لیے इत्तेहाद ضروری का. ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن ریٹ پٹیشن فائل کی ڈکلیریشن کی ڈکلیئر میں اس کی کیا ضرورت پڑی کہ جب آپ آلریڈی فارم سبمٹ کر چکے کہ آئی بلانگ ٹو سرٹن پارٹی. واٹ واز دی نیڈ؟ کیوں آپ گئے آپ بیل مجھے مار خود گئے کہ مجھے ڈکلیئر کر دو؟ کیا ضرورت ہے ڈکلیریشن لینے کی؟ فارم 33 میں وہ لکھنے نہیں دے رہے, پی ٹی آئی لکھنے نہیں دے رہے. فیصل صاحب وہ کہاں فارم 33. فیصل صاحب فیصل صاحب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ کنٹینیو کریں نا, سنی اتحاد کونسل کی حیثیت سے کنٹینیو کریں آپ. سر آن اے لائٹر نوٹ, یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے اگر his lordship the chief justice, although he says the judgment is absolutely clear, یا آپ تھے اگر جس طرح وہ کسٹم ایکٹ میں ایکسپلینیٹری نوٹ ہوتا ہے نا, اس ججمنٹ میں بھی ایک ایکسپلینیٹری نوٹ ہو جاتا میں اور بھی بہتر ہے مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, پلیز مجھے مس اور اس سے بھی لائٹر نوٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ سارے مسئلے اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے حل ہو جاتے. جو پارٹی جس کو آپ نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ الیکشن کروا لیتے انٹر پارٹی, ختم. نہ ہمیں یہ باتیں آتی, نہ یہ والی پٹیشن آتی, نہ وہ والی پٹیشن ہوتی. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا کہ الیکشن نہ کرواؤ, بس اتنی سی بات ہے. فارم 33 ذرا جی دیکھیں. فارم 33 سارا جھگڑا ہی وہیں سے اٹھا ہے. ذرا آ جائیں. اس میں کہاں پہ کینڈیڈیٹ کا سائن کرنا؟ اگر آپ دیکھیے گا یہ لسٹ آف کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ, جی 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 اوپر الیکشن 2 کون سا ہے, کانسٹیٹوینسی ہے, پھر نیم آف کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس. یہ کس ٹائم پہ کیا جاتا ہے؟ بفور دی الیکشن. جی بفور دی الیکشن. اگر آپ اس کا یہ جھگڑا تھا, یہ جو 5th کالم ہے نا اس کے اوپر, اس میں انٹری نہیں کرنے دے رہے تھے. کون نہیں کرنے دے رہا تھا جی؟ الیکشن کمیشن. دیکھیں یہ فارم تو ریٹرننگ آفیسر جو ہے, صحیح بات ہے, میں سب میں سے وہی پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس نے کرنا تھا. جی جی کینڈیڈیٹ نہیں کیا نا, اس لیے الیکشن کمیشن کے پہلے لاہور ہائی کورٹ گئے, پھر الیکشن کمیشن یہ کے تو بعد. 22 تاریخ کو آپ نے جمع کیا, 20 اور 22 ہوئے. یہ تو سمپل لینے سے پہلے جمع ہوا ہے. نہیں یہ اس کے بعد ہوتا ہے سر, الیکشن سے پہلے. یہ 13 جنوری کے بعد ہوتا ہے, یہ 13 جنوری کے بعد والا ہے. یہ فیصل وہ تو نامینیشن پیپرز ہیں سر. فیصل صاحب جی اگر میرا تھوڑا سا اسپیکنگ فار مائی سیلف, جی جی آئی ہیو اے کوشچن فار یو کہ آپ مجھے یہ بتائیے جو اصل اسٹیک ہولڈر ہے, ووٹر, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. یو آر ہیئر بفور دی گارڈین آف دی فنڈامنٹل رائٹس اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ رائٹ از دا رائٹ ٹو ووٹ. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے, there were complaints of to political party thi PTI. It was consistently complaining that it was not getting a free hand to contest the elections.
लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी. वो कंप्लेंट्स हमारे सामने नहीं है, सॉरी. let me just complete. हमारे सामने आएंगे, Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. What should be the approach of this court? Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. What should be the approach? How to secure the right of that voter and not to pretend that everything is hunky-dory? My lord, I think the approach should be that the issue which is before your lordship, and like this issue, which is an election issue, a democracy issue, that the judgment should reflect the true representation of the voter. That is what the approach should If I may put what you are saying in different way, that if on the basis of what the parent statute says, that Form A is the controlling form, rules must give way to the parent statute. Yes, All of these returned candidates were PTI candidates. yes, Forced by a cascading series of errors of law by the Election Commission to take on the garb of independence, right? yes, And on that basis, they have sought safe haven under you. yes, So the question boils down to is this: if they were as a bloc in the National Assembly as PTI, they were then entitled, in terms of that provision we are considering, apparently, to proportionate reserved seats. Therefore, are they to be denied those reserved seats simply because now they have taken shelter under AVI? Is form to control substance, or is the substance of the Constitution? Because from the current situation, that prima facie, subject to whatever the many, many illustrious learned counsel who are waiting to pounce on my questions may offer, to deny you the form, you are just the form. Those reserved seats is to deny the substantive party that stands behind you, PTI, because you are here only because they are here. Therefore, I go back to the question that I asked over and over again. What is in the very peculiar facts and circumstances of this case, of this general election, what is a political party for purposes of that? And I've given you the example. The word elect is used there in a very strange way. There's no election. there is no election. So why? So a word elect can be used in a slightly different way in order to accommodate the constitutional requirement. Why not political party? Behind your form lies the substance. What should the Supreme Court obey? Yes. Substance or the form? Yes. That would be my alternative Mr. argument. Faisal, if I could just take that further and get to the real controversy. And let if I me can- endorse or that if I as can- well. We really need to understand what the controversy is. Thank you. If the lady is endorsing me, I'm very flattered. No, but I just want to add that borrowing Justice Munib's term, the cascading errors are behind us now. I think the question before us are, as you framed, the two questions. What is proportional representation, and whether at all SIC is a political party for our purposes? I think we can't go back into the cascading errors or the gallery of errors that were there. That's not challenged before us. So let's not, spend time there. We've moved on. The precise two questions, as I see it, is what does proportional representation mean, and whether at all SIC is a political party. Is that right? Yes, So let's address these two questions head on. yes. The only thing, and I'll come to that because that would be the answer to the fourth Because जो question. पुराने errors में नहीं, छोड़ दे, गुजर गया There था। is one way of, without going back, really correcting the errors. And when I come to the interpretation of Article 51, I will build on
observations with Dekhiye, both your lordships. you don't have to respond to errors or whatever. That is for the ECP. Yes. You were compelled, and so you did what you had to do. But Let them answer what they think was the right way to do it and what their orders meant. Your job is to explain what your claim is. Your claim emanates out of Article 51. And you've been asked to explain proportional representation, but it appears that the phrase is proportional representation system of political parties list. Yes. So what does this mean? Yes. And on the basis of the meaning attributed to this, what is your case? Yes, yes. I think if I may just, speaking for myself, just add to what my learned colleague has just said, the gentleman and not the lady, that I think it is important to understand what the cascading errors of law have been, for the very simple reason, at least in my view, to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard,